गुड इवनिंग जी। तारीख है 23 नवंबर। आज मंथली कैंडल स्टिक कंप्लीट हुई है और चलिए शुरू करते हैं मार्केट के एनालिसिस। सबसे पहले अपने निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स पोर्टफोलियो की है। उसके बाद हम मैं सारे सेक्टर्स के एनालाइज करेंगे और देखेंगे कुछ और ब्रेकआउट स्टॉक्स जिनको हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, अगर निफ्टी की आप देखेंगे तो कल निफ्टी ने शानदार रनअप दिया था, एक शानदार ब्रेकआउट दिया था, तकरीबन 1% का मूवमेंट दिया था। ठीक है। आज की अगर मूवमेंट देखें तो आज की लोअर बुक आप देख रहे हैं कितनी शानदार बनी है। इसको समझने के लिए हम 75 मिनट चार्ट में चलते हैं। आज दिन की पहली कैंडल 0.52% डाउन थी। बाकी तीन कैंडल बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में मार्केट एकदम बुलिश होकर एकदम ऊपर जाके क्लोज किया ऑल टाइम हाई पे। ठीक है। तो मार्केट का बुलिश सेंटीमेंट, जितना सेलिंग आई थी पूरे दिन भर की सेलिंग, लास्ट के 75 मिनट्स में पूरी सेलिंग कवर हो। ठीक है। और बुलिशनेस ऑफ दिस चार्ट कैन इजीली, तो इसको आप क्लोजिंग बेसिस में देखें तो जस्ट मिनट, हाँ, निफ्टी को क्लोजिंग बेसिस में आप देखें तो निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने प्रीवियस स्विंग हाई का तोड़ दिया है। ठीक है। इसका एमएसीडी देखिए एकदम हाईली बुलिश है, आरएसआई इज आल्सो बुलिश और वॉल्यूम बिल्डअप इन लास्ट 75 मिनट चार्ट। सी ह्यूज वॉल्यूम बिल्डअप। इसका मतलब क्या, इसका मतलब निफ्टी में फर्दर अप मूव ड्यू है और जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है मोस्ट प्रोबेबली कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है। ठीक है। तो अभी निफ्टी का जो टारगेट है क्या, प्रीवियस स्विंग हाई 20,000 ना 250 के आसपास का लेवल है। ठीक है। तो तकरीबन 100 पॉइंट यहाँ से भी ऊपर है मूवमेंट। देखिए जरा स्क्रॉल करके देखते हैं कितना है। यस, 250 के आसपास है क्लोजिंग बेसिस में अगर देखें तो। ठीक है। तो बुलिश निफ्टी में बुलिश बाइस हमारा बना हुआ है। हमने जो निफ्टी में फ्यूचर्स की पोजीशन ले रखी थी उस सबको हमने आज रोल ओवर कर दिया, यानी अभी भी हमारा बाइंग इसमें बाइंग सेंटीमेंट फ्रेश हमने ब्रेकआउट नहीं ऐड नहीं किया, क्योंकि फ्रेश पोजीशन हम ऐड करते हैं बेस्ड ऑन वीकली डेली चार्ट ओनली। ठीक है। तो डेली चार्ट में तो कोई पुल बैक आया नहीं है, इसलिए हमने फ्रेश पोजीशन नहीं ऐड करी है। तो निफ्टी बहुत बुलिश है और किसी भी दिन अपने प्रीवियस स्विंग हाई को टच कर सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद हमने क्या कर रखा है कि चूंकि निफ्टी में हम लॉन्ग हैं तो वी आर लॉन्ग इन फ्यूचर्स एंड सिंस जब आप फ्यूचर्स होल्ड करते हैं तो, और इसका मूवमेंट भी काफ़ी स्विफ्ट हो चुका है एंड इट इज़ नियर इट्स रेजिस्टेंस लेवल, इसका प्रीवियस स्विंग हाई इसको एक बड़ा रेजिस्टेंस दे सकता है। तो ऐसे केस में क्या हम क्या रखे हैं कि ऊपर का तकरीबन 21,000 का हमने कॉल शॉर्ट कर रखी है। तो क्या है कि जितना मार्केट यहाँ पे टाइम लैप्स करेगा इस अपने रेजिस्टेंस के पास, ऑल टाइम हाई के पास, उतना उसकी टाइम वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो निफ्टी बुलिश है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, कल जो हमने लेवल मार्क किया हुआ था, जस्ट मिनट, बैंक निफ्टी का हमने लेवल क्या मार्क किया था, ये बैंक निफ्टी हमने बोला था कि इसका जो बेस्ड ऑन द वीकली चार्ट हमने मार्क किया था, दिस इज द वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी को बोला था कि प्रीवियस स्विंग हाई जब तक इसका ब्रेक नहीं होता है, दिस इज द प्रीवियस स्विंग हाई, जब 43,575 का लेवल ब्रेक नहीं होता वी आर लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। आप बिल्कुल मंदी की बात करिए मत, और इसको लॉन्ग होने के लिए प्रीवियस स्विंग हाई इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कितना है तकरीबन 44,600 लेवल। जब तक 44,600 के ऊपर नहीं मूव करता, आप देखिए बिल्कुल वहां से जाकर एक नीचे रेजिस्टेंस लिया है, संभव है यहाँ से ब्रेक करके ऊपर मूव कर देता है।
अगर इसके ऊपर मूव करता है तो यू कैन गो लॉन्ग इन फ्यूचर्स इन बैंक निफ्टी विद दिस टुडेज क्लोज एज स्टॉप लॉस। कितना? 44,500 का स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, और इसके साथ यू कैन गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी, ठीक है। एंड द पॉइंट टू नोट हियर इज सुपर ट्रेंड ऑन द वीकली चार्ट पॉजिटिव हो गया, यानी अब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही बुलिश पैरिश में है। बैंक निफ्टी में एक्चुअली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज काफी गुड इन कंपैरिजन टू निफ्टी। सो इफ यू वांट टू, देखिए अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर मूवमेंट दे देता है, ठीक है, तो जस्ट होल्ड ऑन, अगर बैंक निफ्टी समझिए यहाँ से ऊपर मूवमेंट करके यूं मूव करती है, ठीक है, दो मिनट ये है। इसके बाद बैंक निफ्टी ने इस टाइप से मूवमेंट दे दिया, इस टाइप से मूवमेंट, थोड़ा सा नीचे पुल बैक एंड देन अप साइड मूवमेंट, इस टाइप की मूवमेंट आ सकती है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो आप प्रीवियस स्विंग लो जो है आज का क्लोज, इसको पकड़ के इसमें फीचर्स में लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक। तभी इन कंपेरिजन टू निफ्टी, अगर आपको फीचर्स में पोजीशन इनिशिएट करनी है, देन बैंक निफ्टी इज एट बेस्ट प्लेस। once it goes above this previous swing high of 44,660, you can increase this quantity. टाइटन को देखिए, टाइटन ने जब से इसको इस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक किया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तब से वन साइडेड डिस में रहना पाया है। हम इसे फ्यूचर्स में और कैश में दोनों में लॉन्ग थे, एंड सी व्हाट हैपेंस, एक पुल बैक आया नीचे से, वापस उसको कवर किया, एक दिन रेस्ट किया, एंड सी आज इट वाज अप बाय 2%। तो मार्केट को प्रिडिक्ट करना इज नॉट द टीडियस वर्क, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप रिलीजियसली अपने कैंडलस्टिक पैटर्न को, चार्ट्स को फॉलो करते हैं, यू कैन इजीली मेक आउट मार्केट कहाँ जाने वाला है, ठीक है। सोलर इंडस्ट्रीज, सी सोलर इंडस्ट्रीज में अब इसका वीकली चार्ट भी, कल का दिन और है, एंड आई डोंट थिंक दैट इट विल move in such a way that this super trend on the weekly chart goes positive. It has become a sell now. Look at the volume with which it has gone down by 3.7% in one day. हमने क्या किया था जब फर्स्ट डे, जब इसमें सेल ऑफ आया था, here in this candlestick at 7,000 level, we squared off 50% of the quantity that we are holding, because we were aware of this fact that the stock has given a huge rally since its breakout level. See, the stock that was 4861, it touched how much? 7475, almost double, है ना? So with this candle, as the volume was also huge in this candlestick, we squared off 50% of the quantity, and since that the stock is going down without making a major pullback, then next trading session it holds something, and इस third trading session में जब उसने उसको तोड़ दिया, we squared off rest 50% quantity. Means by this candlestick we were holding only 25% of the quantity here, and see what happens here. it gave a small pullback and then break its previous swing low, and in last two trading sessions this stock is down by almost how much? Just wait, I'll let you know. It is down by around 17% in a week time. ठीक है, तो had we not exited our 75% of the quantity here, all the gain that we have made in this movement would have gone vanished. तो टाइमली आपको स्टॉक से एग्जिट करना इज इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है। anyhow, we were lucky enough to exit this stock at the right time. Nevertheless, the next stock that we discuss here is Tata Legacy.
डेली कैंडलस्टिक में देखें तो it seems that the stock has gone into consolidation phase. See, the stock is consolidating here, isn't it? But if you look at its weekly chart, you'll find इसमें कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी दिक्कत नहीं है. It is just broken out of its consolidation zone. See here, what's happening? It is just broken out of its consolidation zone and थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है. And once it goes above its previous swing high, this level, ठीक है, 8465, it will make a bullish movement with target 10159. 10,200 का लेवल है इसमें टारगेट, ठीक है. But this stock is consolidating in this junction. Its weekly candlestick is positive above 60. Daily candlestick has just broken this, and it may go deep up to this 40 level. If you look at its monthly candlestick, yes, this one has also broken after this consolidation zone. See, the stock has given breakout in the monthly chart also, and its RSI on the weekly chart. It has crossed its signal line. This is very bullish signal. ठीक है. Then is CDSL. CDSL को weekly chart में देखें तो this stock has actually broken its previous swing high, and tomorrow also. Look at its MACD on the daily chart. Very bullish, very bullish. So this week it is expected to give positive return here, and follow-up week में भी positive return आएगा. Yes. आज के दिन क्या है कि since we have exited 50% of its BSE quantity, so CDSL has actually gained that BSE position. It has become 25% of my portfolio. So I'm very heavily invested in this CDSL stock. Every movement of this stock changes the fortune of my, this the fate of my portfolio. CDSL में BSE, the moment it turned from its just making a short-term bottom, I was very much intuitive to this movement of BSE and was very much desperate to add some quantity here. But as on 30th of December, पांच election states में जो election हुए हैं, the results are likely to come. This market is very bullish, but any untoward result in respect of market may give a shock to the market. So I basically avoided to add further position in these stocks, as these stocks have already given huge rally. So any type of jerk in the economic conditions, in the political scenario, may give a shock to this type of stocks, which have actually moved a lot in the previous rally. बिरला सॉफ्ट को भी अगर देखें तो वीकली चार्ट इट हैज ब्रोकन इट्स प्रीवियस स्विंग हाई, है ना. This is another stock which has actually moved like BSE since it broke almost same structure है BSE जैसे. So that's why we have, though we have actually recommended this stock at this level 359, but we couldn't make out to add this quantity here because आप limited पैसा ही होता है and you have you like to prefer invest in limited stock only. लेकिन अब जब it has proven its potential, it has proven its way of movement equivalent to that of BSE, this stock has come into my radar, and definitely will definitely deploy a huge chunk of money in this stock. And then LNT को अगर देखें तो this LNT in the weekly chart it is about to break its छोटा सा cup and handle type of structure, and its MACD which has actually gone below its signal line, it is reverting back, and most probably in a day or two trading session it will go above its signal line. Look at its MACD on the daily chart. It has broken out kitna swiftly, just bouncing back from its signal line. This is very bullish. Once it goes above its previous swing high, it will give a huge rally here. Calangeres making higher high, higher low structure.
And if you follow the weekly chart here, as this stock has actually turned back from there, यहाँ से टर्न बैक हुआ है, एक छोटा सा पीक बनाया है, तो now calendars के the previous swing low, this 317 has become actually very important here. See, once it goes below this previous swing low, 314, I will exit this calendars here, because if on the weekly chart it goes below its previous swing low, that means the stock has gone, मतलब काफी लंबे टाइम के लिए it has gone into consolidation phase. Not to worry. We have put one alert here. Once it goes below its previous swing low, it will give a indication, and I will exit my full quantity here in the calendars. And then Zomato. Zomato में क्या है? We were actually willing to exit some quantity here, लेकिन it make a huge bounce back from here. हर बार इसमें pull back काफी deep आते हैं. But if it's MACD on this weekly chart goes below its signal line, it will, you can't expect a huge movement in this stock here. So I would prefer to deploy part of this money to some other stock. Then Titan, already discussed, given a beautiful run up. BSC, look at the volatility here. The deep corrections are and kitna immediately bounce back ho raha hai. So if you look at the weekly chart here, daily candlestick, see its signal line has its MACD has crossed its signal line, and I am actually waiting for this 30th 3rd of December result and its MACD signal line. MACD line to get stable above its signal line. Once it becomes stable, I will deploy further quantity here. It has broken its previous swing high. No doubt the stock has given a good rally here. ठीक है. It is above 60. RSI on the daily candlestick has bounced back from its 60 level and is moving up. Okay. If you look at the 75-minute chart, you'll find RSI इसके यहाँ जाके ऊपर गया है. Okay. चलिए, तो मोटा मोटा हमने क्या किया कि निफ्टी के एनालिसिस कर लिया, अपने पोर्टफोलियो के एनालिसिस कर लिया, बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लिया, और मार्केट मोटा मोटा बुलिश ही लग रहा है कल. तो लेट अस होप व्हाट हैपेंस, और बस बुलिश प्राइस बना के ही मार्केट में ट्रेड करिए. इस समय आपको शॉर्ट करना may become dangerous to your health. पागल बोली. Thank you. पापा मम्मी मुझको पागल बोली. पापा